Students, today we are going to discuss about inner product space. इससे पहले हम inner product की definition देंगे, तो देखिए, let V be a vector space over a field F, any field F, that is VF. Define a function V cross V to F satisfying the following axioms. The first axiom is symmetric property. Function must be symmetric property where bar represent as complex conjugate. The second property is linear. Function is must be linear. And third property is non-negative, always greater than or equal to 0. And if this value gives 0, if and only if your vector is 0 for all u and v belongs to vector spaces and AB belongs to field, then this function is known as inner product. अगर इन ये फंक्शन तीनों एक्सियोम्स में से किसी एक एक्सियोम्स को भी अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कहेंगे दिस इज नॉट एन inner product on V. But now this function is a inner product on V. This is inner product on V. And V, this structure V and this function is called as inner product space. If F is equal to C, a complex inner product space, and this is known as unitary space, and if field is equal to R, is a real inner product space and is known as Euclidean space. Let's see. Definition के बाद में हमारे पास एक given function है. We have to show that this function must be inner product on C square over C, where u is x1 comma x2, v is y1 comma y2, C square over C belongs to C square over C. यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो u और v, तो u के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 x2, x1 u के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बार नहीं है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका एलिमेंट है u वेक्टर्स के एलिमेंट्स के ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है. v के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बार है. सो दिस फंक्शन is inner product on given vector space. So we have to prove there the function is must be symmetric property, and function must be linear property, and function must be non-negative. For this, let's see one by one. We have to prove this first. This is symmetric. Let u comma v comma u, v comma u क्या होगा, 2 of y1 x1 बार, y1 x2 बार, y2 x1 बार एंड y2 x2 बार. हमारे पास गिवन है ये. टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इस नंबर का क्या हो जाएगा, यू नो z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार. तो जब इस सभी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस. अब यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो वो क्या होता है हमारे पास, शाबाश बोलो, z1 z2 बार which is equal to z1 बार into
Z2 बार। दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स के प्रोडक्ट के ऊपर जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है तो नंबर्स के अलग अलग पर क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर सेम हमने यूज़ किया। और नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर आप देखिए x1 डबल कॉन्जुगेट, y2 डबल कॉन्जुगेट, ये क्या होता है, z1 किसी भी नंबर का अगर डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वही नंबर। तो यहाँ पर x1 डबल कॉन्जुगेट, x2 डबल कॉन्जुगेट, x1 डबल कॉन्जुगेट, x2 डबल कॉन्जुगेट, तो हमारे पास आ गया ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट u कोमा v। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में v कोमा u का बार लेके चले थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके चले थे, और हमें क्या मिला, u कोमा v। सो दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। Now second property we have to prove is linear property. This function is linear. So let's take w belongs to c square and ab comma belongs to c, arbitrary element. Then au plus bb is again a complex number and belongs to c square. So au plus bb, w by the definition of function. Solve this, you will get this and this. This is nothing but u comma w, and this is v comma w, and this shows that linear of the function is linear. Now third axiom, u comma u by definition is x1 bar, x1 is a complex number. We know z1 into z1 bar is equal to mod of z1 bar square. So using this here and using this here, now here x1 x2 bar plus x1 x2 bar and again bar. So we can use here z1 plus z1 bar is equal to 2 times of real z1. So here we can use this 2 times of real of x1 x2 bar. Now x1 and x2 belongs to c, so these numbers are this. Now taking mod, that is modulus of x1 and modulus of x2. Now real part of x1 x2 bar, so this is x1, this is x2 bar. The taking product, you will get the real part. Now use the mod of x1 square and x2 square and real part. Here 2x1 2 alpha 1 square 2 beta 1 square alpha 2 square beta 2 square and 2 times of alpha 1 alpha 2 plus beta 1 beta 2. So alpha 1 plus alpha 1 square plus beta 1 square और एक alpha 1 square और एक beta 1 square इस complete square करने के लिए यूज़ हो जाएगा. So this is positive, this is positive, this is positive. So whole quantity is always greater than 0. Okay, now this is equal to 0 if and only if alpha 0 beta 0, and this quantity must be equal to 0 and this quantity must be equal to 0. Using this here alpha 2 0 beta 2 0 by alpha 1 0 alpha 2 0 beta 1 0 beta 2 0, you can say x1 0 and x2 0. So, and here you can say 0 comma 0. This is 0 vector. Hence given function satisfy all the three axioms. Hence the given functions form an inner product on
C square C, and this form a inner product space